We are starting with the 5th chapter. This is the writing skill that you all are having again, that is note making. In note making already you all have you all have done in 12th, but you all have done only one type of note making. There are two types of note making, that is linear and non-linear note making. We'll study in detail ahead, but जो तुम लोगों ने किया है नोट मेकिंग, वो ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, उसको फिलअप करना है. Thus the blanks that you all were filling up, or you all were making the tree diagram from the paragraphs, right? So here there are two types that you all will learn in detail. That is, see this, linear and non-linear. From this you will learn, or you can say as, to improve the comprehension and retention material through accurate and meaningful notes. इस पे क्या है, तुम लोग जब भी वो passage पढ़ोगे, when you will read that particular passage, so you will get the grip on the paragraph. So जब भी comprehension, when you will solve, it will be very easy for you all to solve it and understand it properly. Clear? Note making is an essential study skill in academic, is making good notes and reviewing them regularly to maximize learning. Abhi mostly whenever you all are studying, you all are making notes about the particular topics or chapters. So right, this is one type of note making that you all will learn कि हर एक chapter पे से मुझे कितना लेना चाहिए और कितने importance है. How to make notes, this will teach you all. Note making is useful as going through bulky documents, both hard and soft copy. Listening to long lectures and attending day-long conferences trying to remember what was preached can be very tedious, right? वो बहुत lengthy. मैं भी तुम लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, it is very much lengthy. But what you all do? You all do it in briefing way. You all study it, and then when you all are writing it, you all write in brief, right? Advantages and strategies, just go through it by yourself. We'll read these strategies because it will be important for you all to understand. Read the text at least twice. First time to get an overview or to identify the main idea, and the second time to draw the important points. First time what you will do, you will just read, you will just get the main ideas about what the comprehension, what the passage is telling you all. And after that, what you will do, for the second time you all are underlining the main points. जैसे तुम लोगों ने प्रेसी राइटिंग में किया था वैसे ही, but in this you all have to go very deeply into the paragraph and then you can give a note on that. Frame a heading, title based on the main idea, right? Avoid using long sentences and sentences as title. Long sentences होने नहीं चाहिए. Look how the main idea has been presented and developed. Normally there are 3 or 4 subordinate associated ideas. Frame the subheadings based on these. जब भी तुम लोग non-linear already तुम लोग कर चुके हो, linear note making जब करोगे तो heading, subheading, sub-subheading, ये सारी चीजें आएंगी. So when you all are making that thing, so उसमें बहुत important है, when don't make the long sentences. छोटे छोटे टाइटल्स होने चाहिए, छोटे छोटे हेडिंग्स होने चाहिए जो तुम लोग वहां पे फ्रेम आउट करोगे. Ignore information or points which are less important.
जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, नो नीड टू इंक्लूड दैट इन दैट, ब्रीफ और स्पेसिफिक एज पॉसिबल। एग्जाम्पल्स को छोड़ दो, अननेसेसरी डिटेल्स है तुम लोग को लग रहा है तो वो भी छोड़ दो, डोंट, नो नीड टू राइट। सिस्टमैटिकली डिवाइडिंग and subdividing the important information, write the point in a logical sequence. Though you write in phrases or points only, information should be complete. हम phrases में लिखेंगे या फिर सिर्फ heading, सब heading या फिर सब heading देंगे, but वो जो हम heading दे रहे हैं उसमें से वो सामने वाले बंदे को it should be clear that what we are trying to say. Or when you are reading that particular notes, so it should be clear कि हाँ इतना सारा है, ये पूरा पैराग्राफ इस पे ही है, right? Next, suitable space, number, subheadings and sub points. Leave no space. Avoid adding your interpretation and ensure that you do not change the author's intended meaning. अभी जो भी passage का meaning हो रहा है, you will not change. You cannot change the meaning. Wherever, anywhere, वो comprehension हो या कोई भी grammar का कोई topic हो, you all can't change the meaning what the sentence is saying, right? Abbreviate. The main thing that you all have to learn is abbreviation. यहाँ पे एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एब्रीवेशन इफ यू विल नॉट डू, जैसे तुम लोग की व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज होती है ना, व्हाट्सएप आज ये इसमें बहुत काम आने वाला है कि तुम लोग को लिखना ही है व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जो एब्रीवेशन हम यूज करते हैं वो थोड़े थोड़े काम आएंगे और बाकी मैं तुम लोग को दे दूंगी, राइट? एंड इन मॉड्यूल ऑल्सो इट इज गिवन टू यू ऑल. Note making and note taking are the two terms used synonymously, but we must distinguish between the two as there are suitable difference between them. Note making means क्या और note taking वो दोनों different thing. They are two different things. Note taking is a passive process that involves taking down and what is heard and or read without actual processing of the information. Note making मतलब मैं खुद पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, पैराग्राफ को मैं bifurcate कर रही हूँ, and then I am writing the notes. That is called note making. And taking means what? What I am making you all write without understanding. You all are writing all the things. You all are understanding, but you all are not अंडरस्टैंडिंग बिफोर राइटिंग. जब तुम लोग लिख रहे हो ना तभी तुम लोग समझ रहे हो. और नोट मेकिंग में क्या हो रहा है? you all are understanding first and then you all are writing. There are two different things. Making means you all are understanding first and then you all are writing, and note taking means you all are writing and understanding. Clear? Styles of the note making. Linear note making. Examples देखो यहाँ पे. Note making tips. Now you can see as this is the heading, this is the subheading, and this is sub point. Then this is subheading again. सब पॉइंट गाइस कब आता है कि यहाँ पे रीडिंग हेडिंग दिया हुआ है, राइट? रीडिंग इज द हेडिंग. अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उस पे ही यहाँ पे नोट मेकिंग लीनियर में बनाया हुआ है. रीडिंग इज द हेडिंग. दिस इज क्लियर? Read twice. This is subheading.
सब सब पॉइंट क्या हो गया कि रीड ट्वाइस के अंदर 2 बार क्या पढ़ना है वो लिखा है. दिस इज सब सब पॉइंट. समझ में आ रहा है? सब सब पॉइंट में क्या दिया था वो पैराग्राफ में कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई मेन आइडिया एंड सेकेंड टाइम आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मेन आइडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 मिल गए. नाउ हियर व्हाट यू विल डू, नंबरिंग में बहुत ध्यान रखना है. यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे A1 आ जाएगा. एंड इफ यू ऑल आर मेंशनिंग द सब सब पॉइंट तो A1.1 आ जाएगा. एंड अगर सेकेंड सब सब पॉइंट है तो A1.2 आ जाएगा. अभी चलो यहाँ पे ये वापस सब सब पॉइंट कंप्लीट हो गया. 2 ही पॉइंट्स है, ओनली 2 पॉइंट्स. देन अगेन आई एम हैविंग द सब हेडिंग इन हेडिंग टॉपिक में. सब हेडिंग दूसरा वाला है विच दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स. राइट, यहाँ पे देखो कितने एब्रिवेशंस यूज किए हैं. UL मीन्स अंडरलाइन. Then see second heading that is planning, division of content. ACC means according to. ये जो बॉक्स बना रही हूँ वो उतने एब्रिवेशंस यूज किए गए हैं. और इसमें और तुम लोग यूज कर सकते हो. ये इंपॉर्टेंस है तो IMP लिख सकते हो इसके जगह पे. राइट, अभी ये हेडिंग आ गया वापस. ये सब क्या है, सब हेडिंग. इसके अंदर सब सब पॉइंट की जरूरत नहीं है क्योंकि थीम के अंदर और बाइफरकेशंस दिए नहीं है. इंपॉर्टेंस के अंदर बाइफरकेशंस नहीं है. टाइम के अंदर बाइफरकेशंस नहीं है. तो सिर्फ सब पॉइंट लिख के सब हेडिंग लिख के छोड़ना है. दिस इज सब हेडिंग. क्लियर? थर्ड हेडिंग that is writing. This is subheadings and subheading is this. अगर ज्यादा है about 3 and 4 use phrases, ignore unimportant information, intent and number subheadings and subpoints. ये सब क्या आ गए, सब points में आ गए. subheadings, right? सबहेडिंग्स के अंदर क्या क्या लिखेंगे, ये सारी 4 चीजें. राइट, अभी राइटिंग के अंदर और एक है हेडिंग दैट इज एब्रिवेशंस. अगेन हेडिंग, देन अगेन सब हेडिंग. दिस इज सब हेडिंग, this is subheading and this is sub point. Right, abbreviate long words, often repeated words. This is C, abbreviation again. Use common symbols and acronyms. ये सब क्या है, सब point है. Next is non-linear note making. Non-linear note making means nothing but a mind mapping. You can say that you all have to read the paragraph and you all have to make a tree diagram, or the tree diagram is already given to you all and you all have to make the paragraph. Right, फिर वो ट्री डायग्राम बोला हो, टैबुलर बोला हो या फिर पाई चार्ट बोला हो, you all can get anything in this. But सबसे ज्यादा important, there are less chances for this to come क्योंकि ऑलरेडी हम 12th में इसके एग्जाम दे चुके हैं. पूछेंगे तो लीनियर ही, तो लीनियर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. आई गिव यू ऑल द एग्जांपल्स फॉर दिस, बट लीनियर के लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज वो एक ग्रिप बैठना चाहिए. बट एक बार आ गया देन
you can score a good marks in this note making. Maximum kabhi bhi BCR mein you all will not get full marks guys, but whenever you all will get maximum 4, 4.5, 4 तो मिल ही जाएगा. अगर perfect लिखा है तो 4, 4.5 they will give. You all should understand the paragraph. यहाँ पे सिर्फ 2 बार बोला है. Read it 2, 3 times and your speed should be more and fast. Right? See this. यहाँ पे एक example दिया है. किसके ऊपर है? Health के ऊपर है पूरा. Now, how they have bifurcated, you see. Health is depend on how much things. Stress, exercise, sleep, diet. Right? These are the headings. Now see, causes are the subheadings. Causing, relaxation, solutions are the subheadings, you can say. In stress, एक्सरसाइज में अगर देखोगे तो वार्म अप है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, स्ट्रेचिंग दिया है, एरोबिक दिया है, स्ट्रेंथ एंड टोनिंग दिया है, ट्रेडमिल है, बाइक है, स्मूथ एंड स्लो, देन नो पेन. राइट? इफ यू विल सी इन डाइट, देन इन डाइट हेडिंग्स क्या दिया है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, उसके अंदर ब्रेड्स एंड सीरियल्स, तो उसके अंदर बाइफर्केशन, सब पॉइंट के बाइफर्केशंस क्या है? वाइड वेराइटी दी दी है. विटामिन, तो विटामिन ए, बी, ए, सी एंड ई दिया है. Vitamins and you can say as vegetables, that is low in fat. Fiber दिया है. Right? Sleep बहुत affect करती है. If you have heard, so sleep is the important thing that you have to complete. Maximum at night 7 to 8 hours are compulsory that we should complete our sleep. अगर हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, after this, if I am not able to complete the sleep, I will fall ill, stress होगा, फिर I am not able to pay attention in my studies, and there are many more things that I can't complete. Right? Daily routine मेरा क्या हो जाएगा? Shuffle हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, it will be spoiled. See this, consequences, stress, mistakes, hard to concentrate, ये सारी चीज, insomnia. 33% of our life sleep में ही जाती है. Comfy mattress होना चाहिए. Tips they have given: regular exercise, regular hours, no smoking. अब अगर स्ट्रेस होता है तो कॉजेस क्या होता है? तुम लोग के लिए एग्जाम्स है, कोई काम पे जाता है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होते हैं. रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग. देन यू कैन set the goals, exercise. You should avoid, what you should avoid? Caffeine products, smoking, alcohol, all these things are there. And if health is affected, तो तुम लोग के पास तो एक ऑप्शन है ही, that is डॉक्टर. वजन बढ़ गया है तो डाइटिशियन, और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चाहिए तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ. Right? So there are the helping numbers that will help us to overcome the stress, exercise, sleep and diet. The difference between non-linear and non-linear note making दिया है. Connection between ideas are clear. Not very, and here very, visually appealing. Very difficult to add information later.
एक बार मैंने linear start कर दिया, information लिख दिया, heading, subheading, सब point. After that, at the last, I want to add something. Then I can't add. It is very difficult. But here in non-linear, I can add the information very easily. Structured. There is a perfect structure that you have to follow, a format that you have to follow. But in non-linear, no perfect structure. Using fixed format, and here not a fixed format. फिर कभी वो tree diagram है, pie chart है, then you are having tabular format. There are many things, right? Your example is given, just go through it. बैंक हायरार्की दिया है यहाँ पे, जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर एंड टॉप मैनेजमेंट. उसके अंदर कौन कौन है वो दिया है. Mechanics of linear note making. See this format you all know already. I have already explained your before. मैंने थोड़े से नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं. ये हेडिंग है, right? Or you can write, if you all are writing in Roman numbers, then you will write in whole linear note making, you all will use Roman numbers only and use ABC, right? 6 to 7 abbreviations होने चाहिए, more than one time, guys. बहुत important है. अगर abbreviation use नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा. Abbreviations is very important. And after completing the paragraph, you will write the key and the abbreviations used. Abbreviations used मतलब तुम लोगों ने ऊपर कौन से abbreviations use किए हैं. जैसे मैंने develop use किया है तो DVLP लिखना है और उसका full form लिखना है. सिंबल्स यूज किए हैं अगर, कॉमा, फुल स्टॉप, सिनोनिम, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन, सेमीकॉलन, ये सारे चीजें अगर यूज किए हैं तो सिंबल यूज में डालना है. Now here heading, subheading, what and how you all will give. Just go through it. See, here abbreviations are already given. Use the beginning words. इन्फो का इंफॉर्मेशन होता है, मैक्स का मैक्सिमम होता है, स्टैट का स्टैटिस्टिक्स होता है, कॉर्प का कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेशन होता है, पॉप का पॉपुलर, आईएनटी, इंट का इंटरेस्ट, प्रोमो का प्रमोशन. यूज द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स विथ फाइनल लेटर. GOVT और GOVT वो कॉमा करके गवर्नमेंट, इंटर का इंटरनेशनल, डिपार्ट का डिपार्टमेंट, PRON. यहाँ पे पीछे ING नहीं यूज हो रहा है. See this, PRODN is only used. You can say you all are not using gerunds in the last, right? These are the words that, abbreviations that are omitting vowels, that is problem, school, background, years, flavors, business, right? Use the first letter and the last letter of the word. MT means mount, QT means quad, GL means girl, MR means Mr. Right?
shorten the suffix production, consisting, processing, implementation, decreasing, and checking. So, examples for the symbol. See this. The symbols that are used. Whatever symbols you all are using, and you have to use symbols. Compulsory है. Symbols नहीं use करोगे तो नहीं चलेगा. Use करना ही है. And है तो and नहीं, and का सिंबल लगाओ. परसेंट है तो परसेंट पूरा नहीं लिखना है, परसेंटेज का लगाओ. मनी है तो मनी का साइन डालो. सिंबल यूज करना है. विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क. मार्क्स नहीं मिलेंगे गाइस. कंपल्सरी है ये सब पढ़ना और बाय हार्ट तो करना ही पड़ेगा. एक्रोनिम्स CAO, CEO, CFO, CIO, CMO सबका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. FIFO, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. ये सारी चीजें जो एटलीस्ट मॉड्यूल में दी है वो तुम लोग को करनी ही है. ऑन दिस ऑल थिंग्स you all have to include in this linear note making. See this. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. Most twins are fraternal, which means they develop from two separate eggs which were fertilized at the same time. Such twins are no more similar in physical characteristics than they are other brothers and sisters. About 1/3 of twins are identical, which means they are developed from the single fertilized egg and usually share a common placenta. Unlike fraternal twins, their genetic makeup is identical, so they have a very similar physical characteristics and are always the same sex. जैसे ट्विंस आ गए तो दोनों बॉयज है, दोनों गर्ल्स है, या फिर वन बॉय एंड वन गर्ल आते हैं. सो देयर इज द डिफरेंस व्हाट दे आर टेलिंग. तो अभी वो लोग ने हेडिंग टाइटल क्या दिया है? ट्विंस, बिकॉज द होल पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट ट्विंस. नाउ हेडिंग, इफ यू विल से fraternal twins. Fraternal means different. Fraternal means different. One boy and one girl, you can say. उसमें सब हेडिंग क्या दिया है? Develop from two separate eggs. सेकेंड सब हेडिंग क्या दिया है? दिस इज अगेन abbreviation. Again abbreviation. Fertility of eggs happens at the same time, not similar in physical characters. The box that I am making, that should be, or that is in abbreviation. यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है एब्रिवेशन का, ये डेवलप दिया है. यहाँ पे they needed to write the DVLP ऊपर लिखा है, इसलिए यहाँ पे वो लोग ने फुल फॉर्म लिख दिया है. राइट. सेकेंड हेडिंग क्या दिया है? आइडेंटिकल ट्विंस. पहले फ्रेटर्नल ट्विंस देयर वर डिफरेंट, बट आइडेंटिकल ट्विंस आर सेम. They are looking same. Developed from same one egg, share common placenta. Next is
subheading that is similar in physical characters, and here in the D point they need to write similar sex, right? ये चारों पॉइंट लिखना जरूरी था, वो लोग ने लास्ट पॉइंट लिखा नहीं है. की पॉइंट्स, यहाँ पे कोई भी ऊपर सिंबल्स यूज नहीं किए हैं, देन इट्स ओके. यहाँ पे नहीं किए, बट योल ट्राई टू यूज सिंबल्स एज मोर एज पॉसिबल. डेवलप यूज किया है, फर्टिलाइजेशन यूज किया है, फिजिकल यूज किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किया है, 4 यूज किया है. ये कॉमन नहीं दिया है. समझ में आ रहा है? Five abbreviations they have used, and you all have to write key and what abbreviations that you all have used. And if you all have used the symbols also, then below key you all will write symbol, and then you all will give the name. If you all have used and, then what you will write here? %. Clear? These are the things that are written here. Next is again the example of the Sahara Desert. Just go through it. मैं बहुत deeply नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ हम आगे भी हम solve करने वाले हैं. We are going to solve this. Fine. We'll start with the type 2, guys. See this. The type 2 is nothing but ये तुम लोग को notes already दे दिए रहेंगे. The linear note making, the format. पर तुम लोग को ये पूरे format को क्या करना है? Summarize करना है, एक paragraph बनाना है. See this. This is the answer. Sound travels in the form of waves which the external ears gathers. Passing through the auditory canal, which increases loudness, these waves move to the eardrum. The different parts of the eardrums, that is hammer, anvil, and stirrup, change the weak sound waves into powerful ones. Finally, the waves pass through the cochlea to the corti, where they get converted to electrical impulses and reach the brain, which then allows us to hear the sound. This is the summary that you all are going to write if the linear note making is already given to you all. ये type 2 हो गया. Type 1 में क्या था? ये paragraph दिया है, उसका तुम लोग को format बनाना है, ये linear note making बनानी है. But in next, what you will do? You all have to write the summary of the note that is given to you. Type 3. Read the following passages carefully and make notes on it. Use headings, subheadings, etc. Use the recognizable abbreviation where necessary. Use a format you consider a suitable and appropriate title also, and also write a
समरी, जैसे तुम लोगों ने किया था वो ही, द सेम थिंग की लिखनी है, and then after that you will write a small summary what you all have written to it. First type में क्या था, paragraph, and you all have to make the heading, title, heading, subheading and sub point wala, right, from the paragraph. Second type is पूरा ये heading, subheading, sub point ready दिया रहेगा, you all have to write a summary. And in type 3 दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे टाइप 3 में करना है, दैट इज यू ऑल हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑल्सो, पैसेज दिया रहेगा, फॉर्मेट लिखना है, जो तुम लोग ने मेन पॉइंट्स गैदर किए हैं और तुम लोग ने टाइटल दिया, हेडिंग दिया, सब हेडिंग दिया, सब पॉइंट दिया, और वो लिखने के बाद उसकी समरी भी लिखोगे, दैट इज टाइप 3. दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन व्हाट यू ऑल हैव टू राइट, इट इज टाइप 1 2 3 whatever it is, पर मोस्टली टाइप 1 ही आता है, वो लोग यही पूछ लेते हैं. And this will come for 5 marks. Important question, आएगा तो सही. Fine. Here the theory for note making I have completed. But first I'm going with non-linear note making and linear note making in detail. I'll start in the next lecture. Today I'm starting with non-linear note making. So now open your books, give the heading note making, chapter 5 note making, topic number 6 we are doing. Question number 1. This is, we are starting for non-linear. Now question number 1, prepare a flow chart for the information given below. Right? I'll dictate you all the paragraph. Write down. Fast, huh? After clearing the 10th class, a student has 3 options. 3 options they may choose to pursue science,
having subject physics, chemistry, maths, and biology or may learn commerce, studying economics, accountancy, and business studies or have the option of arts, learning psychology, sociology, and political science Continue. Science students generally opt sorry, it is a spelling mistake. Adopt, sorry. It is science students generally adopt engineering or medical science, adopt engineering or medical science, comma, commerce students pursue CA or BCom, and arts students pursue LLB or fashion designing. LLB or fashion designing. Clear? Now, here you will draw a flow chart. फ्लो चार्ट क्या है? अभी ये पूरा पैराग्राफ किस पे है? The courses after passing out 10th standard, right? So how you all will write? You can write here situation. In situation, what you will write? Class 10th
pass out. This is the situation, right? Then next you can go for the streams that are that are already told to you all in the, which are the streams, that is science, commerce and arts, right? Just write first science. In science, there are bifurcations. That is, you will write the next topic, that is subject. In first science, you all will write, that is physics. Next is chemistry. Next is maths. And the fourth one is biology. Right? Next subject, that is commerce, that is stream. Right? In that, economics, then accountancy, third, that is business studies. Right? Next, that is arts. For arts, that is political science, psychology, sociology. Right? Now, the next heading that you will write here, that is most adopted career options. If you all want, you all can make the boxes that ये थोड़ा highlight हो जाएगा, right? This is the flow chart that we have made. Now for this, career option is two. First is engineering. And medical science. Right? For commerce, that is two. CA and BCom.
And for arts, there is two, that is fashion designing and next is LLB. Clear? See this, the whole flow chart completed. This is for 5 marks. Prepare the flow chart for the information given below. Done? Now, here I'm ending the lecture. We will continue with the linear note making. In the next lecture, we'll practice 3 to 4 topics, or you can say as passages on that, so you all will get a good grip, right? And non-linear note making will be clear to you all on this example, and I will be giving you all the assignment of non-linear and linear both on the day which the assignment is assigned. Clear? Bye-bye.